ओके। तो आज के लेक्चर में लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस की बात करेंगे कि हमारे पास एलडी वेक्टर्स क्या होते हैं और एलआई वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास बेसिस को फाइंड करने में। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलडी वेक्टर्स को डिफाइन कर लें, क्योंकि हम पहले डिफाइन भी कर चुके हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी कि हमारे पास एलडी वेक्टर्स क्या होते हैं और एलआई वेक्टर्स क्या होते हैं। तो लेट अस सी, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एलडी वेक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट, नोन एज एलडी वेक्टर। तो लेट अस सी कि अगर हमने कहा कि वी द वेक्टर स्पेस, लेट बी अ वेक्टर स्पेस over a field F, over a field F. The vectors, the vectors v1, v2 up to vn are said to be linearly dependent if there exists scalars a1, a2 up to an, and provided this not all zero. हमको स्केलर्स मिल जाए जिसमें सारे जीरो ना हो, but their linear combination with the vectors such that this a1 b1 plus का a2 v2 dot 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 plus of an bn is just equal to 0। तो हमारे पास v1 v2 एंड vn हमारे पास एलडी वेक्टर्स कहलाएंगे या लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे इफ there exist a1 a2 and an scalar such that in these scalars, with this scalar, the linear combination a1 b1 plus a2 v2 up to an bn must be equal to 0। अगर ऐसा पॉसिबल होता है, हमारे पास नॉन जीरो, there exists at least one non-zero scalar such that their linear combination with the vectors v1 v2 is equals to 0, then we will say कि v1 v2 and vn are the linearly dependent vectors। okay, इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि their finite linear combination is equal to 0। you can say here this is some finite vectors are said to be linearly dependent if their linear combination can be made 0 without taking all the scalars 0, है ना। उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा 0 आ जाए बिना सारे स्केलर्स को 0 लिए, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हमारे पास एलडी वेक्टर्स होते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट हियर some finite vectors, you can say the finite vectors are said to be linearly dependent if their linear combination if their linear combination can be made can be made 0 without taking
taking all scalar zero. Okay, so this is the definition for the LD vectors. Let us see what will be the define of the LI vectors. कि LI वेक्टर्स कब होंगे, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो तो तभी पॉसिबल हो जब सारे के सारे स्केलर्स हमारे पास क्या हो, जीरो, है ना। तो लेट अस सी द डेफिनेशन। linearly independent you can say Li vectors so vectors which are not LD, you can say the vectors which are not LD are called, मतलब कोई आपको इस नॉन जीरो स्केलर्स ना मिले such that their linear combination is equal to zero. So vectors which are not LD are called Li. Linearly independent, है ना। तो इनको दूसरे वर्ड्स में अगर हमें लिखना है कि अगर वेक्टर्स हम कह रहे हैं कि v1 v2 एंड vn हमारे पास Li वेक्टर्स है, इट मींस that their linear combination is zero if and only if all the scalars are zero. So vectors v1 v2 up to vn are called linearly independent if whenever this is a1 v1 plus of a2 v2 up to dot 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 f of an bn, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो कह रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑल द स्केलर्स आर जीरो, then their scalars will be equal to zero. Then this is a1 is equals to a2 and this is equals to up to an and that is equals to zero. तो यहाँ पर हमारे पास एलआई वेक्टर्स हमारे पास अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो देयर स्केलर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो इन द, इफ ऐसा पॉसिबल है तो वो हमारे पास जो है एलआई वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इफ whenever this linear combination is equal to zero their scalars will must be equal to zero for the Li vectors, okay। तो अगर हम अभी तो फाइनाइट एलिमेंट्स या फाइनाइट वेक्टर्स को हम लेकर काम कर रहे हैं, व्हाट विल बी द फॉर द इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट वेक्टर्स के लिए, तो उसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ V, an infinite subset S of V is said to be linearly independent if every finite subset of S is linearly independent.
independent, otherwise it is linearly dependent. अगर तुमने कोई इनफाइनाइट सबसेट ले लिया है ना, बी इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ बी, एस इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ बी, उसको हम एल आई तभी कहेंगे अगर हम कोई भी फाइनाइट सबसेट ले इसका और वो एल आई बने, है ना, तो वो हमारे पास एल आई सेट कहलाएगा, अदरवाइज उसको हम एल डी बोलेंगे। ओके, तो कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि हम जो इम्पटी सेट होता है उसको हमेशा हम एल आई मानते हैं, है ना, दिस इज डिफाइंड टू बी एल आई। तो कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं जो कि हमारे पास एल डी और एल आई वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं। इंपॉर्टेंट डिजिट नंबर पहला कि जो हमारा इम्पटी सेट है अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसको हमें एल आई वेक्टर ही लेना है, ठीक है। तो द इम्पटी सेट इज डिफाइंड टू बी डिफाइंड टू बी linearly independent, डिफाइंड टू बी linearly independent, है ना, एल आई वेक्टर डिफाइन करते हैं। नंबर दो, पहला है कि अगर सेट के अंदर जीरो है तो डेफिनेटली उसको हम एल डी बोलेंगे। तो a set containing only a set containing a set containing only the zero vector zero vector, you can say a set like this, only zero vector is there, is linearly dependent, ठीक है। तो जीरो वेक्टर का अगर सिंगलटन सेट है तो हमारे पास एल डी होता है, यू नो दैट कि हमारे पास कोई भी नॉन जीरो स्केलर लेके उसे मल्टीप्लाई करके हमको जीरो मिल जाएगा, है ना, तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर एक्चुअली। दूसरा है दैट अ सेट containing only a non-zero vector, नॉन जीरो वेक्टर है तो उसमें बिना जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई करके उसको जीरो नहीं किया जा सकता, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं किया जा सकता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एल आई वेक्टर हो जाएगा। तो नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, that is a set which contains the null vector will always a LD vector, LD set. A set which contains इसको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि जो जीरो वेक्टर है उसके साथ नॉन जीरो स्केलर ले लो, बाकी और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो भी जा रहा है, और सारे और अदर स्केलर जीरो ले लो, तो एक नॉन जीरो स्केलर आपको मिल गया, इसका मतलब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है with the one non-zero scalar, in that case जो हमारे पास सेट हो जाएगा that will be a LD, that was the definition of LD। so a set which contains the null vector, the zero vector is linearly dependent, is linearly dependent। okay,
नेक्स्ट रिजल्ट को हम लिखते हैं if two vectors are LD, है ना, then one of them is a scalar multiple of other, then one of them is scalar multiple of other. clear? Every superset of LD vectors will be a LD vector, LD set. Every superset, मान लो एक सेट है, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे पास एलडी हैं, ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली दैट होल सेट विल बी अ एलडी सेट. एवरी सुपर सेट of a linearly